A very good evening. Welcome to this webinar. Today, the webinar is going to be about the best money making careers after 12th. Hello, everyone. Greetings for the day. I'm Sakshi Mundra here, and today we are going to have a very important discussion about the best money making careers after class 12. So, we have two very eminent speakers with us Mr. Jitin Chawla, who is an MBA graduate from one of the topmost business institutes of India, Faculty of Management Studies, University of Delhi. Mr. Jitin Chawla is the founder and director of North India's topmost career counseling, aptitude testing, profile building, and study abroad firm from the past 23 years. He has been doing a number of shows on NDTV, CNN, IBN, Delhi Aaj Tak, Headlines Today, you name it. He's also written for various newspapers and magazines like India Today, Aspire, Outlook, HT, Dainik Bhaskar. I would like to thank Mahindra University for supporting today's webinar. We have another eminent speaker with us, Mr. Arjun Pujari, who is joined as an advisor and professor emeritus, Department of CSE, Mahindra University in November 2020. He was with University of Hyderabad since 1985. He's received his PhD from IIT Kanpur. He advised various several students in terms of the PhD and masters from their dissertations. He has served as an advisory capacity in several decision-making committees of DST, UGC, AICTE, DOS, etc. I welcome Jitin sir over here on this panel. Thanks a lot, Sakshi. Thank you. So, good evening, everyone, and welcome to the show. And today we are going to discuss in detail about careers you can really grow fast. I get this query from a lot of students, and irrespective of stream. So, when I go to a school or even college, and there are students who have done science, somebody has taken up humanities. I went and spoke to students who are pursuing psychology. Everyone keeps on asking, Sir, paisa kitna milega? How much can I earn? How can I grow this? How can I really, and it's absolutely fine. So compared to a generation earlier, suppose मैं चला जाऊं maybe 30 years back. So that time people were not really talking about money so much, and they would talk about other things. But today students are very clear that I want money, which is fine. Yeah, you can earn good money. You should do good work and earn great money. So hello everyone, I have Bindu Kumar, Adit, hello Shubham, Vijay, Aditya. Oh, Yatin Skater, you're back. I'm so happy to. Yatin Skater is a guy who has attended so many workshops, and I don't know for how many years now, Yatin? Almost four years now. So, but great to be having you. And Yatin, I'll invite your comments also. Hi Shagun, how are you doing? So today we'll discuss about careers. So देखो, there are two things. दो बातें हैं. एक, तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा पैशन इसके लिए, इस चीज के लिए है. जैसे मुझे एक टाइम पे समझ में आ गया कि मैं बना ही करियर काउंसलिंग के लिए हूँ. मेरे को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना अच्छा लगता है. सो न्यूज़पेपर्स पढ़ना, वेबसाइट्स, लोगों से, मतलब मैं बहुत डिटेल में, इवन पेरेंट आते हैं तो एक एक चीज़ पूछता हूँ कि अच्छा क्या करते हो. अच्छा, चाइना से इम्पोर्ट करते हो, तो क्या चीज़ इम्पोर्ट करते हो. प्लास्टिक वेस्ट कितने का आता है, यहाँ कितने का बिकता है. सो आई ट्राई टू चेक एवरीथिंग सो दैट आई डोंट नो, आई लाइक टू डू इट. और मैं अभी नहीं, मतलब फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई बीन लाइक दिस. आई एम क्वाइट इंक्विजिटिव. मैंने अपने लिए भी जब अप्लाई किया था, आई रिमेंबर आई अप्लाई टू SCRA, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, जो मेरे बैचमेट्स को पता भी नहीं था. NDA आई अप्लाइड फॉर, मतलब मैंने इतने सारों के लिए अप्लाई कर दिया था, मेरे को खुद भी उस समय पता नहीं था कि क्या करियर होगा. बट या व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कुछ समझ में आया कि यार इसमें तो हम बिल्कुल पागल की तरह करेंगे. आई एम रियली क्रेजी अबाउट इट. तो उसमें डेफिनेटली अच्छा करोगे. या कुछ अच्छा ऐसा ले लो जो आज के डेट में बहुत अच्छा चल रहा है. सो मेरा कोई पैशन नहीं है, बट हाँ मैं ठीक पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेती हूँ. मेरे को अच्छे करियर में जाना है, मेरे को पता नहीं कि, लेकिन मेरे को अच्छा पैसा तो कमाना है. सो आई वांट टू अर्न गुड मनी. सो अकॉर्डिंगली यू कैन. या विजय न्यूट्रिशन में भी हो सकता है. इंस्टाग्राम पे जाके एकता डाइटिशियन चेक करो, मेरी अच्छी फ्रेंड है. सो एकता ने अपने आप किया. आई थिंक इंस्टाग्राम पे उसको कम से कम 2.5-3 लाख लाइक्स होने चाहिए आज की डेट में. हाय गर्भ, हाय सनल सचदेवा, हाय परम. सो सो एक बारी तुम देखो तो मजा आएगा. और सबको फॉलो करोगे तो कभी भी अच्छे पैसे नहीं कमा पाओगे. मतलब आई सी स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल. अरे मत करो यार ऐसा. क्यों? तुम खुद ही ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ मतलब 15-16 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं.
या तो तुम उतने कॉम्पिटिटिव बनो, जो कि हर जगह नहीं हो सकता। ऐसे ही तुम सोच रहे हो मैं यही कर लूंगा या बाद में आईएएस कर लूंगा। यार आईएएस को ऐसे बच्चों का खेल थोड़ा। पेरेंट्स को लगता है कि आईएएस कर लो और हो जाए, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। अरे 10th में 95% लाना बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब इट डजंट मीन कि आईएएस कर लेंगे। सो ओके, यतिन इज अ TOM, तो किसी को बाहर का पूछना पड़ेगा, तो यू कैन चेक विद यतिन। Yatin, I'd like to do a session with you, and you can catch somebody else from some other university. So we'll highlight Technical University Munich, and we'll highlight, I don't know, TUB. एक दो यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ we'll do जर्मनी में कैसे कर सकते हैं. So we can talk about it. ओके, सो कमिंग बैक स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बता रहा था कि ऐसी फील्ड जो सब लोग ट्राई कर रहे होते हैं उसमें जनरली मुश्किल होगा। और अगर तुम्हारे ऊपर भी अगर तुम उतने उतने कॉम्पिटिटिव नहीं हो तो पक्का नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसी फील्ड कभी नहीं करना। सो यू आर अ 90%, 85%, 80%, और तुम जेई में लगे हो, नीट में लगे हो, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ सक्सेस आर क्वाइट लेस कंपेयर टू कि तुम ही अगर इकोनॉमिक्स करने लग रहे हो, तुम अगर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर रहे हो, तो ऐसी फील्ड ढूंढो आसपास जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। मैंने करियर काउंसलिंग ऐसे टाइम पे स्टार्ट किया जब दिल्ली में, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में 3 करियर काउंसलर्स होते हैं, 3। टुडे देर आर मोर देन 600 कंपनीज डूइंग करियर काउंसलिंग, या बट पीपल लाइक मी और टॉप के जो 2-3 लोग हैं, वी वुड टेक अवे 70% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द मार्केट, या वी वुड क्रिएट टीम्स एंड सो ऑन। सो दैट इज वेयर इट इज। जब मैंने स्टार्ट किया तब भी मतलब कोई भी किसी को समझ में नहीं आता था। माई पेरेंट्स वर लाइक क्या कर रहे हो, माई फ्रेंड्स वर लाइक पता नहीं क्या होता है करियर काउंसलिंग। माई ब्रदर वॉज लाइक छोड़ दे यूएस आ जा, यू नो। सो सो ऑल दो स्टोरीज आर बीइंग गिवन। सो दैट इज वाई और लोगों से पूछ के नहीं होगा, तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। या डॉक्टर से ज़्यादा कमा सकते हो विजय। सो विजय, एक जाके गूगल करो मेडिकल स्टार्टअप्स इन इंडिया, देखो उसमें कितना फंडिंग मिली है लोगों को, मतलब 100-100 करोड़ की फंडिंग मिली है। या और मेरा सबसे सक्सेसफुल काउंसलिंग केस देखो, डॉक्टर रितेश मलिक देखना। उसके पापा का मलिक नर्सिंग होम था। अभी डॉक्टर रितेश मलिक मास्टर्स इन ऑन्टरप्रनरशिप MBBS के बाद करके ऑन्टरप्रनर बन गया। या तो ऑन्टरप्रनर अर्न्स मच मोर देन अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। ओके, सो या रजनी, आई सिलेक्ट क्वेश्चन थोड़ी सी लेट में लेता हूँ, पहले मुझे एक चीज क्लियर करने दो ऑडियंस को कि मतलब हाउ डू यू गेट ऑन टू थिंग्स वेयर यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। सो अपना काम करोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाओगे। गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता उतना पैसा, मतलब अंडर द टेबल उसकी बात नहीं कर रहा, वो गलत है उसमें। कल को तुम बिहाइंड द बार्स भी जा सकते हो। बार्स माइट नॉट लुक लाइक मतलब लाइट वाला बार्स, बट इट विल बी लाइक बिल्कुल आयरन रॉड्स। सो तो जनरली स्पीकिंग एंटरप्रेन्योरशिप तो एक बहुत बड़ा करियर है जिसमें खूब सारा अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, सो लिंक ऑफ दिस लाइव सेशन नेहा को भेज दो, रिवू कैन जस्ट सेंड इट टू यू, और रिवू कैन जस्ट पुट इट अप हियर सो दैट नेहा कैन कॉपी इट। सो सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आई विल शो इट टू यू एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस आल्सो इन सम टाइम, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। Can you put up the presentation, please? Rivu, can you put up the presentation? So चलो, जब तक अधिराज का मैं ले लेता हूँ। आर्मी और एनडीए सर, एनडीए के थ्रू तो जाओगे आर्मी में। एनडीए और आई एम अधिराज, आई एम से ग्रोथ कितनी ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट। So we are Delhi's topmost career counseling firm. Rather, I would say India's. We work with schools in India and outside India. We work with few colleges also, and we keep on doing a lot of events, a lot of activities. Okay. Neha Kumar, your link is there, so you can check on this link. Next. ज़्यादा रिस्क होगा धीराज, तभी तो ज़्यादा पैसा आएगा। जॉब्स कीप ऑन चेंजिंग। जो जॉब्स आज से, तभी मैं पेरेंट्स के साथ आज सवेरे भी एक स्कूल में 2 अलग अलग पेरेंट्स के ग्रुप से मेरी बात हुई, तो मैं उन्हें यही कह रहा था कि अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, जनरली सब लोग बात करना स्टार्ट करते हैं CA BCom, नए करियर की बात क्यों नहीं करते? वाई डोंट योर टीचर्स टॉक अबाउट फाइनेंस, फिनटेक, बिजनेस एनालिटिक्स? या
Can I build up a good career? That you can build up a great career. I have a girl who did MBA business analytics from a very average, मतलब टॉप 40 में भी नहीं है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग सैलरी 11 लाख पर एनम मिली। 6 महीने में उसने चेंज कर लिया, उसकी सैलरी आज 16 लाख पर एनम। 16 लाख पर एनम, 1.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट पर मंथ इंडिया में अच्छी सैलरी है। या सो लविश नाटा में तो बिल्कुल भी नहीं है यार। आर्किटेक्चर अगर तुम करोगे, और एक मतलब एसपीए से एक गर्ल ने स्टार्ट किया, सुचिता, मेरे को नाम भी ध्यान है, मेरी ही स्टूडेंट है। तो उसको स्टार्टिंग सैलरी मिली 25,000। तो एसपीए जो कि टॉप इंस्टीट्यूट है, तो मतलब ठीक है, किसी को चलो 25 मिल रही है, किसी को 20, किसी को 30। तो 25 to 40,000 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी है आर्किटेक्चर में, खास पैसा नहीं। सो देखो, अभी ग्रोइंग जॉब डिमांड किसकी है? डेटा एनालिस्ट, बहुत जॉब्स, एआई, मशीन लर्निंग। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आज भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कोर्सेज। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट। या इंडिया में लोग शाई हुए होते हैं। सेल्स यार अच्छा करियर होता है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो शाई ऑफ इट, थैंक्स टू प्रॉब्ली इंडियन पेरेंट्स। सो डोंट बी शाई ऑफ सेल्स। अगर तुम बात करने में अच्छे हो, वाक पटुता अच्छी है, इफ यू कैन कन्विंस अदर्स, सेल्स इज अ ग्रेट जॉब। Countries like US, a lot of youngsters train themselves on sales. अगर तुम देखोगे मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स जिसने स्टार्ट करके इतना बड़ा बनाया, ही वाज अ सेल्स गाय। द फाउंडर मूवी देखो, रिव्यू इफ यू कैन राइट द फाउंडर मूवी, आज तुम सब लोग देखो, मजा आएगा। या Shagun is asking which country is best for studying clinical psychology. Shagun, I would say Australia, though there's a process. So if you can message on our number, which Rivu will show, I'll get my team member to speak to you. Yeah. The founder movie. Yeah, you can watch this founder movie. Okay. So we have to find out jobs which are really, really growing. Next, please. जैसे ये फील्ड है, व्हाट इज दिस? बायो प्लस एनालिटिक्स। अगर मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, ये मेरे लिए बहुत फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। तो मैं कहाँ क्या करूँगा? आई कैन डू बीएससी लाइफ साइंसेज एंड देन आई कैन गो फॉर मास्टर्स कोर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सबसे अच्छा कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर बाहर से कर लूँगा और मज़ा आ जाएगा। बेसिकली काम क्या करते हैं ये लोग? पिछले 10 साल का डेटा लेके अगले 5 साल के लिए प्रिडिक्ट करेंगे लंग कैंसर के कितने केसेस होंगे किसी रीजन में, डायबिटीज के कितने केसेस होंगे जम्मू में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो या लविश, अपना बिजनेस तो किसी के लिए भी अच्छा होता है। अपना बिजनेस कहीं भी करोगे तो हमेशा अच्छा चलेगा, प्रोवाइडेड यू वर्क ऑन इट। या सो नेक्स्ट, so computational biology is a good option. I'll cover other options also. Pahul, just wait. Finance, hot career, very, very hot career. Me and my team, we go to more than 200 schools every year. But I have never heard of somebody coming and saying कि सर मुझे फाइनेंस में जाना हो। मतलब बहुत रेयर, शायद 200 स्कूल्स में से 2 स्कूल्स में किसी ने बोला होगा। या अभी भी कॉमर्स के स्टूडेंट बीबीए जानते हैं, इको जानते हैं, बट फाइनेंस नहीं जानते। कैन आई गो फॉर फाइनेंस डायरेक्टली आफ्टर 12th? आंसर इज यस। कैसे करूंगा? सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, बीबीए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, नारसिमोजी मुंबई, बीएससी फाइनेंस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, बैचलर्स इन इको एंड फाइनेंस। ऐसी अशोका, मतलब वहाँ भी हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सो व्हाट जॉब्स डू आई गेट इन फाइनेंस? आई विल गेट जॉब्स इन वेंचर कैपिटल। क्या होता है वेंचर कैपिटल? सो कोई भी स्टार्टअप्स लाइक स्विगी, जोमेटो, अर्बन क्लैब, ये सब वेंचर फंडेड कंपनीज है। यू कैन लुक एट दैम। या यू कुड बी स्पेशलाइजिंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, you could be doing treasury management, अलग अलग जॉब्स होते हैं, risk management. You might be working with some top notch, surprisingly even after engineering a lot of people will come to finance। क्यों? इसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत अच्छे एरिया है। So you will definitely get a good job, good this thing after finance। लक्ष्य, फाइनेंस को समझो। लाइक मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं। ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी पहले ग्रेजुएट किया था, एमबीए किया था, बट मेरे ज़्यादातर बैचमेट्स जो फाइनेंस में गए, अगले 7-8 साल में उनकी सैलरी 1 करोड़ से ऊपर हो गई। या सो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। आफ्टर ह्यूमैनिटीज, राजीव, कुछ जगह मैथ्स चाहिए होगा। अगर मैथ्स नहीं है, यू कैन स्टिल डू बीबीए फ्रॉम प्लेसेस लाइक सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, महिंद्रा, एंड एमबीए में फाइनेंस चूज कर।
Next, the bogeyman. Yes, you can be a data scientist after PCB. Then you have fintech. ये भी फाइनेंस से रिलेटेड एरिया है. बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज being delivered using technology is fintech. BBA fintech, amazing option, amazing. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, बट कहीं पर कॉम्पिटिशनल फाइनेंस भी लिया हुआ तो उसमें भी ये चीज़ आ जाती है. ओके, सो फिनटेक इज अगेन अ ग्रेट ऑप्शन. चेक आउट यूनिवर्सिटी लाइक क्राइस्ट, महिंद्रा एंड कपल ऑफ अदर्स. लविश, यू कैन टेक इंडिविजुअल काउंसलिंग. मुझे तुम्हारा पूरा समझना पड़ेगा, ऐसे खाली एक दो चीज़ समझ के नहीं आता. सो टेक अ कंप्लीट काउंसलिंग सेशन. You can call us on these numbers which are flashing on the screen, and my team will help you in keeping this. प्रखर सिंह, केमिकल इंजीनियरिंग में ठीक ठीक जॉब्स हैं. अगर तुम IIT से करोगे तो 14-16 लाख पर एनम का स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा. मेरा एक स्टूडेंट है, उसने IIT से, कौन सी IIT से किया था, आई फॉरगॉट, IIT रुड़की से किया था शायद. तो उसको जॉब मिला था नेस्ले में 14 लाख पर एनम स्टार्टिंग, और फिर वो शेल में चला गया. अभी इंडिया के बाहर रहता है वो. अब BCA भी अच्छा है परम, प्रोवाइडेड इट मैचेस यू. PCB बाद डाटा साइंटिस्ट बनना है, डाटा साइंटिस्ट मत बनो, बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ. तो PCB के बाद BBA कर लो और MBA बिजनेस एनालिटिक्स कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बोगी मैन, कैसा नाम है बोगी मैन? Shagun, Rebu, you can pass this question to study abroad team. Somebody can research and you can just come over. Adhiraj, इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए इसमें मैसेज करो द नंबर्स, एंड देन वील कैन बी. या सोनल, डेफिनेटली BSc फाइनेंस कैन बी डन आफ्टर PCM. बिल्कुल कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ओके, जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है उसके लिए ये अच्छा हो. एक्चुअल साइंस इंडिया से कर लो, UK चले जाओ, एक दो पेपर्स वहाँ भी कर लो. यू विल बिकम एन एक्चुअली इन UK. गुड मनी. इंडिया में भी करोगे, पूरा नहीं भी कर पाए तब भी यू कैन गेट गुड जॉब्स. What do actuaries do? They calculate the financial risk of an insurance company. So कैसे बनते हैं एक्चुअली? पहला एग्जाम होता है ACET, followed by CT series, CA series, SA series. मतलब 15 पेपर्स आफ्टर ACET. पहले ACET क्लियर करो, फिर ये 15 पेपर्स क्लियर करो, you become a actuary. You can check more details on actuariesindia.org. Okay. IITM दिल्ली से कर रहे हो लक्ष्य अग्रवाल? बोगीमैन, PCB के बाद अगर कनाडा जाना है या UK जाना है, बहुत अच्छा कोर्स है UCL. रिवू, इफ यू कैन राइट UCL, BSc मेडिकल एंड इनोवेशन. प्रेक्षा, यू कैन गो फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस. प्रेक्षा सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल ट्रेड का मास्टर्स में है IIFT. वैसे IIFT का बैचलर्स भी चालू हुआ है काकीनाडा कैंपस में, बट कहीं से मैनेजमेंट करके फिर IIFT में मास्टर्स कर लो. सेकेंड एरिया प्रेक्षा सोनी इज IR, इंटरनेशनल रिलेशंस. या फिर जितिन चावला जैसे करियर काउंसलिंग कर लो. तो मैं भी, आई एम इनवाइटेड टू डिफरेंट प्लेसेस. आई गो टू कुवैत, ओमान, दुबई. आई बीन US, कनाडा. यूनिवर्सिटीज में जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए, टर्की. सो आई हैव आल्सो ट्रैवल्ड अ लॉट. मतलब किसी करियर में बहुत अच्छा करोगे तब भी तुम काफ़ी ट्रैवल करोगे. या आदित्य, इन पुणे यू कैन चेक आउट सिम्बायोसिस पुणे, जो ओरिजिनल सिम्बायोसिस है, काफ़ी अच्छा है. उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स टोटल पढ़ते हैं. सो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे इज़ अ ह्यूज, वेरी बिग यूनिवर्सिटी. फिर और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, बट ये दोनों तो सबसे अच्छे हैं. Business management, Lavish, you can check out. IIMs are pretty good. I'm Indore after 12th. I'm Rohtak. After 12th, पूछ रहे हो Lavish या after graduation? Specify करो. Next. चलो थोड़ा सा, I'll take some more slides. Then I'll answer your questions. Entrepreneurship. I'm sure a lot of you have seen Shark Tank. Yeah? So you want to be a shark. You want to come out fast. Go for entrepreneurship. So entrepreneurs क्या काम करते हैं? Entrepreneurs, they think of an idea, they build up a business plan,
दे ट्राई टू अट्रैक्ट फंडिंग. हो सकता है बूट स्ट्रैपिंग करें तो शुरू के अपना भी कुछ छोटा मोटा डाल सकते हैं, बट यू कैन गेट फंडिंग ऑल्सो. बहुत सारे गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इंक्यूबेटर्स होते हैं. इफ यू गो ऑन यूट्यूब एंड चेक हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, यू गेट लॉट ऑफ वीडियोस. या सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं क्या कोई कोर्स कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं ना. काफ़ी यूनिवर्सिटी जैसे महिंद्रा यूनिवर्सिटी, व्हेन यू आर डूइंग योर बीबीए, दे प्रोवाइड यू opportunities where you can work on business plan, where you have mentoring available, where you have incubation center available. Otherwise, Narsimanji Mumbai has MBA Family Business and Entrepreneurship. Next. लक्ष्य बीसी के बाद बाहर चले जाओ. अभी हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें प्रोफाइल का समझा देंगे, रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश होता है, सोशल प्रोजेक्ट कैसे करना चाहिए, कुछ एडिशनल कोर्सेज करो, अच्छी इंटर्नशिप करो. बाहर जाके 1 साल या 2 साल का कोर्स कर लो, डिपेंड्स ऑन विच कंट्री. लाइक यूके जाओगे तो 1 साल, ऑस्ट्रेलिया यूएस जाओगे तो 2 साल का मास्टर्स करके यू विल गेट वेरी गुड जॉब्स. स्टार्टिंग सैलरी 70-80 lakhs तो हो ही जाएगी. या मेरा हिस्सा रख लेना बस. ओके, अभी गेम डिज़ाइन आएगा इस प्रेजेंटेशन में. वर्गिल, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, वी विल हैव गेम डिज़ाइन. या अखलाक जैन इज व्हाट? Preksha, if somebody wants to, Preksha in India, if you want to BBMBA integrated मत करो. खाली IIMs में होता है तो अच्छा रहता है, बट स्कॉलरशिप्स काफ़ी कम है एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव. अदरवाइज BBMBA इंटीग्रेट मत करो, जस्ट गो फॉर विच एवर इज द बेस्ट. ये नहीं होता कि इंटीग्रेट बेटर है, बट विच एवर इज द बेस्ट. सो यू कैन डू एरोनॉटिकल एंड स्टिल वर्क इन स्पेस रिसर्च एरिया. What can I do law after 12th as a PUB student? Yes, you can do law after anything. So you have to keep on giving entrance exams. You can do law, and law is a good career. अगर अभी क्लैट मिस भी हो गया है तो सिम्बायोसिस, नारसिमन, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट की 100 एकड़ कैंपस अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कर सकते हैं. गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यू कैन डू. और सो इन सब यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं. Adit, you have to focus on internships, like profile building for MBA. Internships are very, very important. Research paper published in some international journals, preferably. Any write-ups you can do for any media, like Times of India, Economic Times, anything. Any blogs you have done, any Instagram thing you have done to showcase. नहीं, क्लैट को ज़्यादा मिलती है नया. Okay, on the screen you can see data scientist. So अगर मैथ्स नहीं है तो डेटा साइंस लाइक इंडिया में थोड़ा सा फाइट है, बिकॉज इट्स मोर कंसिडर टेक्निकल, बट बिजनेस एनालिस्ट यू कैन स्टिल डू. एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स तो कोई भी कर सकता है. मतलब बैचलर्स में तुमने बीबीए किया, मास्टर्स में एनीबडी कैन गो फॉर बिजनेस. बिजनेस एनालिटिक्स अ हॉट करियर, गुड मनी यू कैन मेक. यू कैन वर्क इन कंसल्टिंग कंपनीज ऑल्सो, लाइक डिलॉयट, KPMG, एंडरसन एंड सो ऑन. ओके, नेक्स्ट. Share after some time, just wait please. ओके, सो देखो आईटी में इंडिया का बहुत अच्छा नाम है. माय ब्रदर, माय रियल ब्रदर, ही वाज जस्ट हियर फ्रॉम यूएस. सो माय ब्रदर वाज क्वाइट एवरेज स्टूडेंट. उसके सामने नहीं बोल रहा, अदरवाइज ही विल रियली फाइट विद मी, बट ही वाज ऑनेस्टली वेरी एवरेज स्टूडेंट. एंड उसने मतलब 12th में भी एवरेज से मार्क्स आया, बीकॉम किया, उसके बाद एमसीए कर लिया. उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री अच्छी चल रही थी, तो इंडियंस का खूब नाम है. मेरा भाई पिछले 18 साल से इंडिया के बाहर काम कर रहा है. Yeah, and he has built up houses in 3 countries and he has done very well. So it's not, कई लोग कहते हैं BCMC भी अच्छा है, प्रोवाइडेड तुम्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. तुम्हें उसमें किस चीज़ में स्पेशलाइज करोगे? AI/ML, क्लाउड कंप्यूटिंग, CRM, SAP, augmented reality, virtual reality, cyber security, what exactly, and then you can build up. लविश, यस कॉलेज नेसेसरी है, थोड़ा ठीक रहता है, आगे के लिए भी कुछ करना हो तो ग्रेजुएशन किया हो तो अच्छा रहेगा. बोगी मैंने डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर फ्रॉम. सो मैं IIM से करके बिजनेस एनालिस्ट लगता हूँ तो 1.5-2 लाख पर मंथ. मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से करके बिजनेस एनालिस्ट लगूंगा, बैचलर्स किया है खाली, तो 7-8 lakhs पर एनम. बट MBA किया है तो 11-12-15 लाख पर एनम. सरला, जर्नलिज्म में काफ़ी कंपटीशन है और सैलरी उतना ज़्यादा नहीं है, तो सोच के करना. या सैलरीज जर्नलिज्म में मतलब
अच्छे से अच्छे, लाइक आईपी कॉलेज फॉर वुमेन यहाँ दिल्ली में है, वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, वेरी गुड सेटअप, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। लेकिन सैलरी, स्टार्टिंग सैलरीज मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा सोच के करना। प्रियांशु, यू कैन डू इकोनॉमिक्स अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, यू कैन डू स्टैट्स ऑनर्स, स्टैट्स से बहुत अच्छे करियर्स हैं, यू कैन डू मैथ्स ऑनर्स ऑल्सो, या। और जेई नहीं हो रहा तो यू कैन चेक आउट अदर कॉलेजेस लाइक शिव नादर, थापर इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत सारे, महिंद्रा यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो तुम चेक कर सकते हो। Mahindra is such a big university. Mahindra and Mahindra Group. Go and visit them at Hyderabad. प्रियांश, यू कैन चेक कोर्सेज, अगर सोशल मीडिया करना है, यूट्यूबर बनना चाहते हो, नैस एकेडमी, NAS, नैस एकेडमी, 2,500-3,000 के कोर्सेज हैं। मतलब यू शुड स्पेंड मनी ऑल्सो, डोंट बी अ कंजूस। आई नो स्टूडेंट जो कि फ्रेंड्स के साथ आइसक्रीम खाने गए, यू विल स्पेंड 1,000 रुपीज विदाउट बैटिंग एन आईलेट, बट अपने लिए जिंदगी के लिए कोर्स नहीं खरीदोगे। बाय अ कोर्स गाइज, नैस एकेडमी अच्छे कोर्सेज हैं। There are courses on NFT, non-fungible token, cryptocurrency. They are talking on how to be an Airbnb host. Amazing this thing, yeah. So you can check those out. सरला, एक्चुअली जर्नलिज्म में ऐसा नहीं होता कि खाली जर्नलिज्म ऑनर्स करे हुए लोग आते हैं। लाइक मैंने जब करियर काउंसलिंग का काम स्टार्ट किया था, आई रोट एक्सटेंसिवली फॉर HT TOI। अभी भी लिखता हूँ, अब कम हो गया थोड़ा। और अब तो चैट जीपीटी वगैरह आ गया, तो जर्नलिज्म तो बिल्कुल डाउन चला जाएगा मेरे हिसाब से। तो सरला, मतलब तुमने चैट जीपीटी मेरे को लगता है यूज़ नहीं किया, आज करके देखो, मज़ा आ जाएगा। उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी आर्टिकल लिखवाओ, या। सो बोगीमैन, यू हैव टू कम टू अस फॉर काउंसलिंग, तभी होगा। श्रेया अग्रवाल, जेवियर्स कोलकाता इज प्रेटी गुड। तृप्ति, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च इज IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी। IIST करता है बीटेक कोर्सेज, सो गवर्नमेंट का है, इट्स अंडर इसरो। Alternatively, you can go to IISc, take the physics track. You can go for mechanical engineering, computer science, anywhere. You can still apply to ISRO and still get in. You can do BSc physics, MSc physics, PhD, and you can still be a researcher. You can do BSc physics, go to Indian Institute of Astrophysics at Bangalore, and still get in. Sarla, I'll have to understand exactly कि क्या चल रहा है। तुमने तो अभी पूछा जर्नलिज्म कैसा है, so I told you. For commerce person, right now, if you can look at like business analytics, finance, fintech. So Sunanya Goenka, if you can combine commerce with some form of technology. So if I was you, I'll go on Google Digital Garage for all students. Check Google Digital Garage, 160 courses free of charge, 160 courses. Check out courses like basics of code, how do I make an app, how do I make a website. Check out courses like confidence building, public speaking, ये चीज होगा तो अपने आप कर सकते हैं। And of course, analytics, business analytics, yeah. So Miss Goenka, you can check this out. MBBS from private, इतना मजा नहीं आता, depends private कैसा है। Okay, Tulsi and somebody else also asked about psychology. So if you want to be a psychologist, then you can look at, pursuing psychology. Top universities in India: Delhi University, Ambedkar University, check IP University, ये दिल्ली में है। Then you can check out Christ University Bangalore, Mumbai University, University of Pune. In सब जगह I can take up psychology. Then I can specialize some places in masters, some places after masters, in counseling, clinical psychology, and the like. Okay. Vanya Kohli, you can do a BTech computer science and specialize in cybersecurity. Otherwise, Vanya, I'll tell you a country. I don't know whether you'll go or not. So, Tallinn University, Tallinn. Vanya, please write down. Tallinn University, Estonia. Estonia is known for cybersecurity. It is like top country in Europe. वहाँ खर्चा is 6 lakhs per annum. I will guarantee you a great starting salary. और वहीं पर work नहीं करना, you work in London after it, you'll earn at least 3 lakhs per month. अच्छा हो जाए तब वान्या कोहली, then you can send me gold coins. I just take gold coins. Yes. Sarla says,
Yeah, Sarla, if you want something light, go for BBA advertising. Sarla, you can go for BBA advertising. नासिक मंजी में जैसे है, कुछ और जगह भी देख सकते हैं. BBA एडवर्टाइजिंग. सो एडवर्टाइजिंग देख के एडवर्टाइजिंग की फील्ड में आप स्पेशलाइज कर सकते हो. लॉ कॉलेजेस इन बैंगलोर. I'll have to check exactly. So, Ribu, you can check and put up. Uh, Aklang Champ, I thought is very, very good. If you get admission there, just go for it. Lakshya, you'll have to look at some startups in the Ayurved space. So go and check VC Circle or Your Story. You'll find startups, then you can be in. Yes, Sarla BB advertising. That can be a good option. Shreya Agarwal, Australia will be better. Events management, Ambrose, you don't need a degree. Just start working. Work with an event management company, learn it. Side by side, you want to do, you can take up BBA, Masscom, whatever. But it's not about the degree. Events kar karke hi aata hai. So you have to work in that. Param Gupta, you can do BCA, then MCA, or Param, you can do BBA Business Analytics. Nandini Majumdar, check Career 360 website, Careers 360. Mighty Hash CFA is really a good course. You can do post graduation. पहले graduation में कुछ कर लो, accounts, finance की चीजें करो, खूब action लो, मतलब खूब internship ये सब करो, and then check out a site FinLadder, Mighty Hash. If you are in school right now, पहले तो school background में तो लिखा करो. How do I'm not a dreamer. I'm not an astrologer. Vijay, you'll have to come to me. I'll have to understand you more in detail. I can't tell just like that. Tech and Word for finance, you can go for BBA Finance and Investment Analysis, Sukhdev College of Business Studies. You can go to a couple of other universities, like Mahindra has a course, yeah, computational finance. Shubham is my boy. Casino, yes. Yesterday I was seeing Who Killed Sarah, and they were having a casino and this thing, the family, Mexico, oh God, drug lords, and oh God, what all was happening there. Yeah, so Sharafat se casino khol lo. So go to Goa, like Goa offshore, you can open up a casino. So there are ships, Delton, yeah, where in India you can check it out. Okay, Nisha Vora for psychology, I already shared. You can also watch my psychology video. So top universities, DU, Ambedkar. You can check out Gautam Buddha University near Delhi. You can check out liberal arts colleges also. You can check out Mumbai University, University of Pune, Christ University Bangalore. All these where psychology is there. If you want to get into acting, Bogeyman, Ice. I hope everyone knows Ekta Kapoor, who comes out with serials like Nahi, 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 like this. I'm not even able to do it. So she has a training center called ICE. ICE pure India mein phaila hua hai. They have a lot of centers. Like in Delhi, the center is opposite my office only. So ICE, you can go and maybe you get selected in soaps by Ekta Kapoor. अकलंग जैन कोई फर्क नहीं पड़ता. IIT IIM करो या डायरेक्ट IIM कर लो. डायरेक्ट IIM एक्चुअली इज बेटर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट होता तो तुम यहाँ बैठे नहीं होते, IIT की तैयारी कर रहे होते. And just see event management companies in your place and just apply for internship, work with them for some time, you'll understand. Law is very good in Australia, Vishesh Vishnoi. You can connect with us. Yeah. Best online course on nutrition dietetics. I think check futureskills.com. एक बार हम चेक करते हैं. रिबू, if you can take out the best online course also in nutrition dietetics. परम गुप्ता, डिपेंड्स कि तुमने एमसीए कहाँ से किया. इफ यू डन एमसीए फ्रॉम DU, JNU और यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर एमसीए किया है, स्टार्टिंग सैलरी कैन बी 50,000 to 80,000 रुपीज. बाहर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. यश गुप्ता, yeah, so you'll have to think of Yash which areas you are good at. So maybe you're good at language. So I had a friend who had like visual impairment, and we all helped him. And today he's an English professor. So
शुभम मेरा मुंह नहीं खुलवाते इस पे तो अच्छा है, मैं चाय वाय की बातें करने लगता, लेकिन अगर सही तरह कर रहे हैं तो तुम पॉल साइंस कर सकते हो, लॉ कर लो तो अच्छा रहेगा। काफी पॉलिटिक्स में लोग लॉ करके आते हैं, मतलब लॉ किया हुआ होता है तो अच्छा रहता है। 12 पीसीएम कोर्स अदर देन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर रिलेटेड टू साइंस। यार मैथ्स कर लो, नहीं तो फूड टेक्नोलॉजी कर लो, फूड फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी इज अ गुड कोर्स। इको ऑनर्स नहीं होता प्रीति शर्मा अम्बेडकर में, दे कॉल इट मेजरिंग इन इको, मतलब सेम चीज होती है। नेक्स्ट स्लाइड लगा दो यार, अच्छा है। आई एम जस्ट सो स्टक है। इटालियन लैंग्वेज लविश, आई हैव टू सी। कॉस्मेटिक सर्जन, या इसमें खूब स्कोप है। इनफैक्ट मेरा एक बैचमेट ही है, वो लखनऊ में है। सो ही इज अ वेरी सक्सेसफुल कॉस्मेटिक सर्जन। कोर्सेरा में देख लो, ये कोर्स है। काफ़ी कोर्सेज फ्री ऑफ चार्ज हैं कोर्सेरा में। कॉर्नल में भी, कॉर्नल स्टैनफोर्ड वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। सो ये न्यूट्रिशन के कोर्सेज देख लो। नेक्स्ट। Mighty Ash Commerce is pretty good. First of all, I hope you have been playing games like Money by Money Control, StockX to understand stock markets. Second, if you don't want to do stock markets only, you can just go for BSc programs, Bombay Stock Exchange programs. Okay, law, amazing career. Any combination, मैथ्स है नहीं है, बायो वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। या सो साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड, पेटेंट लॉ, बहुत अच्छे करियर्स हैं। कॉर्पोरेट लॉ, या ह्यूमन राइट्स वाला लॉ अभी थोड़ा बढ़ रहा है। मेडिकल लॉ इंडिया में अगेन काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो लॉ ना काफ़ी कम लोग बोलते हैं कि लॉ में चले जाओ, क्योंकि अगेन स्पेशली स्मॉल सिटीज़ में पेरेंट्स परसेप्शन है वही इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, सो ये वाली चीज़ है। So, how can you talk to me personally? Oh, I'm an expensive person. So, you have to come to me for career counseling. Like you can take online also if you're at some other location. Ribu will just flash some numbers on the screen. Sarla, you can be in touch with us on that. परम अभी मैं बोलने वाला हूँ, अभी गेम डेवलपमेंट 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं बोलने वाला हूँ। तो लॉ इज अ ग्रेट करियर ऑप्शन। नेक्स्ट। लविश पाब्लो एक्सप्लोर तो सही है यार, मेरा कई बार मन करता है। मैंने पाब्लो एस्कोबार का ये मूवी मतलब कितनी बारी देखा हो, कम से कम 4 बारी तो मैं देख चुका हूँ। लक्ष्य, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हो अगर कोडिंग कोडिंग में नहीं जाना चाहते। साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, हॉट एरिया है। नहीं तो कुछ भी कोडिंग का एमसीए कर सकते हो। ऑरिगामी क्राफ्ट, आर्यांश, ग्राफिक डिजाइन, लाइक बैचलर्स इन डिजाइन यू कैन डू फ्रॉम एनआईडी अहमदाबाद, फ्रॉम आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, इन सब जगह सबसे अच्छा है। बिल्कुल नहीं बोगी मैन, इट डिपेंड्स कहाँ से किया है। अगर तुम एक लोकल जगह से करके आओगे, मतलब तुमने मेरठ से कर लिया, कोई लोकल से इंस्टीट्यूट से, सीसीएस के अंडर था लॉ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुभम तुम बहुत हंसी मजाक करने लग रहे हो। Okay, CFE, Certified Fraud Examiner. Again, an amazing area to look at. Yeah, if you check in the world, lot of white collar crime is there. India से भी 3 लोग खूब सारा money लेके भाग गए, like 12,000 crores. So Vijay Mallya and others, So that's why CFE. So any graduation, and then you can take up CFE. Next. Design. So human centered design and UI UX design are hot careers. Next. Yash Gupta, check Duolingo. Gaming. A lot of people are waiting for gaming. You can even check out my video on gaming on YouTube. YouTube has more than 200 videos. So check out gaming. उसमें 3 वीडियोस हैं गेमिंग के। सो अगर मुझे गेमिंग में जाना तो मैं क्या करूँ? एक सिंपल सा चीज, बीसीए या बीटेक कर रहा हूँ तब भी आई कैन गेट इनटू गेमिंग। आई कैन बी अ गेम डेवलपर। ओके, सो उसके लिए बीसीए और बीटेक ही है। सेकेंड, गेमिंग मतलब आई एम अ गेमर एंड आई वांट टू डू लाइव स्ट्रीमिंग एंड सो ऑन। उसके लिए यू शुड हैव योर ओन स्टाइल, यू शुड बिल्ड अप दिस थिंग, एंड देन you can start. Of course, you have to be a specialist in certain type of games so that people will follow you, and you should be good at drama and
showcasing your skills also. So if you have it, then course doesn't matter. कुछ भी कर रहे हो वो तो साइड में करना पड़ेगा. No course will teach you that. Third, there are some gaming courses available, but good ones are available outside India. Check Full Sail University in US. Check UCLA. So from there you can go in for specifically gaming courses. Next, Bogeyman, why didn't you marry a girl whose dad has a lot of land? Then you can be a multimillionaire. Bad boy. Okay, that was just mazak, guys. Don't take it seriously. YouTubing. I know a lot of YouTubers who have become really, really rich and successful. If you have a good thing and you can do it ये मत सोचना कि आसान होता है, because this will involve more work than पढ़ाई वाला work actually. But if you're still interested in it, then go for it. Next. So this is our social media. You can check jitinchavla.careerguru. You can check our Facebook also, or YouTube channel तो करना ही चाहिए तुम्हें. I also do a lot of live, so you can like our Instagram so that you get connected. We try to do Insta live with university people, with other people, and so on. Yeah. So right now, what I'll do is we have Professor Arjun K. Pujari with us, and Professor Arun. Sorry, my apologies, Professor Arun with us. So Professor Arun is a very senior person, and he is from Mahindra University. He is from the Department of Computer Science. So we'll quickly take some ideas from him. How do you proceed? So, guys, questions I'll answer later on. So just hold on to your questions for some time. Yeah. Rivu, if you can flash the numbers, I think some people like Sarla is asking about numbers. So good evening, Arun sir, and welcome to the show. It is Good great to have evening. you with us. Good evening. Good evening, Right, right, all right. of you. So I've got a lot of students here who have a lot of queries also. So I'll start with a very basic this thing that like what all specializations are available to a person who's interested in computer science. In the country or in Mahindra University? You are asking a question because you have Initially, been answering, both we can talk in the country also, and then of course in Mahindra University also. of course. As it is, Mahindra University offers 4 lines of, in fact, 5 different specializations. One is BTech in Computer Science and Engineering. Other is BTech in Artificial Intelligence and Machine Learning. Then another BTech is in BTech in Mathematics and Computation, which is a combination of mathematics. And there is another which is called Electrical and Computation, which is a combination of electrical engineering and computer, particularly electronics, because people these days talk about cyber physical system, IoTs, and other things. So you need a lot of electronics background. So this is in that direction. So I would say it is more of robotics, cyber physical system, IoT. Then we have mechatronics, which is mechanical electronics and computer science. And then we have computational biology, life science and computer science. So almost we have covered all disciplines. If a person is interested in biology, he can go for bioscience and computer. If a person is interested in electronics, he can go for electrical and computer. Person is more mathematical oriented, he can still continue a computer science, but the mathematics that is required for a computer, that is what is being trained, and so many other things. What are the things that is not yet, which are not as a specialization but still covered, is as you discuss about cyber security or security systems. As I said, nowhere it is said cyber physical systems, but still the people get trained in cyber physical systems, and of course cloud computing and etc. So when we talk about Mahindra University, so what kind of internships, what kind of industry integration is there at the university? Okay, let me. That is a good thing to do. First of all, let us. The origin of Mahindra University is that it started in collaboration with the École Centrale of Paris, France. And École Centrale is the famous, very reputed engineering institution spread over France. And we are one of those there outside France institutions. So we have a collaboration in which the students from Hyderabad, they go to France to spend a year or a semester
a minimum a semester, and I can go for a year and get trained there and come back. This is an institutional tie-up, and it is anybody who can go can anybody who wants to go can go. In addition to that, we have collaboration with Virginia Tech, where few people go for internship. We have for Florida University, we have Columbia University, and many other US universities where we have tie-up in which our students go there for internship. And in that process, what happened? They also go to the internship in the industry in US and Europe. And that is the internship program, which is officially. And I think tomorrow we are going to sign one more MOU with Norway, in which students can go for 1 year study at Norway while doing the study at our place. So universities abroad are together with us to see that they can study 1 year out of the 4-year BTech there, and then still they come back and then get the degree from us. As far as the local places are concerned, of course, the Mahindra Group have a support there, and any Mahindra Group we can do an internship. In addition to that, Hyderabad itself has got a lot of industries in which you can, all IT industries, let's say, they have internship there. Mr. Chawla, I'm not able to hear you because you are mute. Yeah, I think I was. So if I talk about getting exposure to business also alongside technical this thing, or maybe I have a startup idea. So what kind of help Yes. is there at the university? The first of all that I told you about engineering program, but we have a business program, we have a law program, and we have an education program also. And we are going. We have a bio computational biology or bioscience program. But let's talk about the entrepreneurship and incubation. We have a special program. In fact, very few universities have a department of incubation and entrepreneurship. And we have a full-fledged department. We have people there. And we have also so-called, just recently recognized by Government of India by having an Atal Incubation Center. So we have actually, even in the business school, we have that we have actually a systematic training program for people to go into entrepreneurship. Whether a person is an engineer or a person is in business school or person is in law school, we encourage the person to develop their attitudes toward entrepreneurship. Whether you are actually going to be an entrepreneur or not, that is different. But even if you are employed somewhere, even if you are a manager, you need to have that attitude of entrepreneurship. So that is what we train them. I'll definitely like to hire such people in my company. Yes, there are many people because But we you have can, also. take up. Yes, Yeah. there are two more. I can tell you that these days, even the whole world is talking about something called sustainability. So all graduates are aware of sustainability. All graduates know about energy efficiency. All graduates know what kind of product would be sustainable product, which are not, and so many other things. So there is another side training that we talk about. Another side training that we talk about the French language, that they mandatorily do French language. So many other things. So Great. in one sense, the graduate of Mahindra University has a value addition of a bit of sustainability, a bit of entrepreneurship, and a bit of French language. So let's say if I am a student who's interested in research, so Yes. what can be my career plan? Like maybe if I join your university or any university, how should I plan out? And what are the areas you would recommend, especially in computer science, to build up on a research career? Yes, and the first thing that I think I was hearing you and you said very rightly, the first thing is that a person should be, let's talk about a BTech student who has joined BTech. So he must plan it right from the second year if he is going for a research career. So the summer vacation between second and third year, he must spend in some of the internship at a good institutions. Like take an example, TIFR, Indian Institute of Science, IITs, even New York University, even or Chicago and other places. They encourage students to spend some time there, the summer vacation and other thing, so that they are exposed to research. All of us who are research oriented, we would like younger students to know what is research and the charm of doing research. So all universities encourage students to spend some time to know about research.
So let's say second and third year summer, they spend and get exposed to research, and they think that their plan of going into research is actually reinforced by this exposure. Then what happens that third year, fourth year summer, and during the third year also to some extent, they must work hard to publish a good paper, international journal paper. They must publish. Now, a couple of papers, it is not hard to, if you are working, if you are good in coding, if you are going to a good institution, it is not very hard for you to publish a good paper. But every researcher, there is a basic skill that everybody wants, is that you must be extremely good in coding. Lot of engineers, lot of BTech in computer science, they think that without coding they will do something. But if you are going for research, it is necessary that you must learn coding. Doesn't matter in which language, but you should do. You may be very smart coding person. And then once you publish 2 papers, go for a master's degree, or some lot of institutions take PhD directly from BTech, and you can do that. I think I answer all questions, or any other. So one more thing, like, what would you like? Some people, they're somehow shy. Like, they don't enjoy coding so much. They feel that hey, coding is boring and so on. So apart from coding, what all can I take up in computer science, and or even if I have to build up, what should I do? See, first of all, that if a person is interested in becoming a computer programmer, a computer professional, or if a person is going to be a computer researcher, coding is a must. I don't think if a person is shy to do a coding, then he should plan such a way that he joins an MBA immediately after a BTech, so that the coding part will never bother him. Or maybe he becomes a teacher. He goes for MTech, and after MTech he does a PhD somehow. And but then those lines, even if to do a good PhD, you need to code. Yeah, and these days with so much of about AI, ML, and deep learning and other things, you cannot get away without coding. Fair enough. So I would recommend to students, maybe you can start off with the very basic. In fact, the course is basics of coding on Google Digital Garage, which is a free of charge course. Or you can site like w3schools.com, try out Yes. Python. If some students have never tried it, you can just try out Python and you can build it up. Yeah. Okay. And and to Yeah. add to that, most of the good institutions, what they do is that they don't teach coding in the class. They tell the students to try it out, because playing with coding makes you a better programmer. In classroom, coding will not make you a better. By just lying this, where the comma to be put and what command to be given is not what you should expertise on. Your skill of program, and it comes right from the 12th class. I think they start with 12th class also, they give flowchart. From that side it starts from. So what kind of jobs people get? Like you are in a very big university. So once I complete, what is the starting salary like? How do I grow? And maybe at whatever amount I start off with, in how many years in India can it be double or triple? See, a lot of people are interested in money making. Or if I go outside, then what's the kind of money? What monies are we talking about? It is a good question. Like, I'll take some cues from what you said earlier to the students, that you are talking about IAS and other things. So IAS is one when you give an exam and lifetime you get benefit of that. Computer science is one where as many number of exams will not help you unless you know the subject. And it is a lifetime learning. If today it is machine learning, you get develop skill on that. Tomorrow it is something else, you will be developing skill on that. So what happens is that initially after passing out BTech or MCA or anything, you may be able to get around 7 lakhs per month, per annum to start with. Making it double and other things, a person who is smart enough and start acquiring all the current trendy tricks, trendy skills, he can double it in less than a year time. In fact, I don't think it will be very hard for, but then he has to be very alert that what is the trend and what kind of skill he has to develop. I'll also add a bit of contradiction to what you said. You just said that MCA depends on which place you do. To start with, yes. But I have seen people who have done MCA also from some distance education from Madurai, Kamraj University and other things.
Now they are sitting and leading as a CEO, CTO at some places because they developed their skill. And that self-learning was learned and they started learning it and doing it. So which university you do is not important. What is more important that how much you know. So I would agree with that because one of my students, in fact, he took humanities in 11th and 12th so that he could focus on programming, you know, Yes, and yes, he he became so good at it. He got offers from 4 US based universities and with full scholarship from two, and he went to US and he had yes. made his own web browser when he was in 10th class. He used to make apps when he was in 11th and 12th. So Yes. I come across instances like this also. So I can tell students, you, yeah. yeah, I can tell you for the students that our second year BTech students of Mahindra University recently got an award for a micro robotics of earthworm, so that it will be precision farming, it will be helpful. So nobody taught them that. It is their own skill they developed and started doing this. So like what you get in earthworm, similar robots they wanted to develop so that they can be. Great, great. Internationally, what is the scope for computer science graduates? Like, which countries you can go? How do you go about it? Uh, till very recently, US was the major destination for everybody, but gradually the US policy was slightly difficult. But if you are going for an post graduation in US, then extending that student visa so that you can take up a job and then get an H1B and other things is easier. But if you do an undergraduate at US, getting a visa to stay on would be a difficult thing. So I would advise students not to if they are aiming to continue a job in US, undergraduate will be a bit hard these days because then they will ask to come back and do something. Whereas other countries like Australia and Europe, they are very comfortable. Even New Zealand, they are very Singapore, even they are very comfortable places who they can think of. And US is not bad. There are a lot of job opportunities there in every places, but it is only the government policy which the visa condition is bad. Otherwise, it will be. And even if it is an H1B visa, and after some time spouse cannot work for quite some time, those difficulties are there. But it is not there in London, UK. It is not there in Australia. So I would say that people at least think of doing another strategy is that they can do an higher studies in Australia and then move to US. Okay, great, great. So thanks a lot. You have been very kind and you took all the queries very patiently. I'm sure students would have enjoyed. And in Yes, case you have more queries, you can connect with us and we'll help you connect with Mahindra University. Of course, you can go on mahindrauniversity.edu.in and you can check out the courses which they are offering. You can They have excellent courses as I told about specializations in engineering, so tech area, management area, which is BBA, and also law. So you can check out those courses also. yes. So if you need any career counseling, you can be in touch with us. If you are talking about if you have completed your 12th and you are looking at admissions, you can connect with Mahindra University. You can also take help from our office. We can connect you with them. So, with this, we wish you all the best, students. It was great interacting with you. And thank you, Arunji. Thank you for Thank you. participating. Thank And you. thank Welcome. you. Thank you. Thank you. Okay, students. I think this was it. So I had budgeted for an hour, and I have only 1 minute and 7 seconds left. Japan, Virgil, Japan. You would need to know the language, man. So for best place if you want to go abroad for gaming is Canada. Like Vancouver is a gaming hotspot. There are a lot of College of Interactive Arts. Even Simon Fraser University would be having gaming courses. Or in US, UCLA, Full Sail University. So these are the things which you can look at. Rajni Rani, it depends on how you are. You can look at business analytics. If you're a creative person, look at fashion management, advertising. If you want to help others, you can look at MSW, Masters in Social Work, or you can go for rural management. Depends on how you are. सोनिया आनंद बेस्ट ऑप्शन आफ्टर मेरा वैसे वीडियो भी देख लेना सोनिया बट बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायो प्लस मैनेजमेंट हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स these are best options. Don't do biotechnology. Sonia Anand, a lot of my students are stuck.
बेस्ट कॉलेज फॉर BCA, लाइक DU हैज BSc कंप्यूटर साइंस, अगर मैथ्स से तो कर सकते हैं. So Mysis Pune, Bharati Vidyapeeth, IP University, all these. श्री राम कॉलेज में दक्ष CUET के थ्रू होता है. You can check my video on CUET to understand. Okay, guys, I need to go now. Anrose, you can do your internship right after 12. Don't worry about it. Right after 12. Okay. And if you want to work with us, Anrose, you can send us your CV. You have our numbers. Just WhatsApp your CV to us. We'll try to give an internship where you can help us manage events, online events, if you're not in the town. With this, I wish all of you all the best. Thank you. Bye bye. Thank you.